again and welcome back to another session of commerce class with me Suman Rathore. Students, today we are going to cover the most important chapter of business studies, which is not only important but is very fancy also. Now this chapter is fancy in a way because after reading this chapter, students actually get to know what it takes to manage a business. क्योंकि इस चैप्टर में स्टूडेंट्स को बहुत तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लाइक उनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, उनको फाइनेंसिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं, उनको मैनेज किस तरह से करना है बिजनेस को, ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं एंड दे एक्चुअली लर्न फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. ओके, और इस चैप्टर की केस स्टडीज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट एंजॉइंग द केस स्टडीज ऑफ द चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. So our very first question today is, Amit is running an advertising agency and earning a lot by providing this service to big industries. State whether the working capital requirement of the firm will be less or more. Give reasons in support of your answer. And this question carries 2 marks. Now remember, जब हमने ये chapter discuss किया था तो हमने उसमें दो तरह के capital देखे थे. First is fixed capital, which is required for investment in long-term assets or fixed assets. And second is working capital, which is relatively a liquid portion of the total capital and which is required for investment in current assets or for running the day-to-day operations of the business. And here in this case, क्योंकि अमित एक ऐसे business में engage है जहाँ पे कि वो एक service provide कर रहा है to other businesses. So उसको किसी भी तरह का stock रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी inventory maintain करने की ज़रूरत नहीं है. सो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस होगी और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर. ओके, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना, जस्ट वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो मेंशन कर दीजिए और बता दीजिए कि यहाँ पे अमित की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस होगी और रीजन दे दीजिए क्योंकि उसको कोई भी स्टॉक या इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It says, Suresh is engaged in the business of manufacturing garments. Generally, he used to sell his garments in Delhi. Identify the working capital requirements of Suresh, giving reason in support of your answer. Further, Suresh wants to expand and diversify his garment business. Explain any 2 factors that will affect his fixed capital requirements. And this question carries 3 marks. तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कुछ हल्के फुल्के वर्ड्स के साथ देना है. यहाँ पे क्योंकि सुरेश एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज है जिसका की प्रोडक्शन साइकिल विच इज द टाइम गैप बिटवीन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, राइट, वही होता है प्रोडक्शन साइकिल. तो जिसका की प्रोडक्शन साइकिल लंबा है, इट्स लॉन्गर. ओके, सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ सुरेश विल बी मोर. ओके, now the second part says, explain any 2 factors that will affect his fixed capital requirements. तो हमने जब fixed capital पढ़ा था उसमें हमने factors affecting fixed capital requirements भी पढ़े थे. Remember? उसके कुछ 7-8 points थे, like nature of business, scale of operation, choice of technique, financing alternatives, etc. etc. तो उसमें से कोई भी 2 factors आपने यहाँ पे mention करने हैं. लाइक आप लिख सकते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो इसमें फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, राइट. और सेकंड स्केल ऑफ ऑपरेशन भी लिख सकते हैं कि क्योंकि ये स्केल ऑफ ऑपरेशन एक्सपेंड करने की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी क्योंकि उसका बिजनेस एक्सपेंड होने जा रहा है, उसकी एक्टिविटीज या उसका बिजनेस डाइवर्सिफाई भी होने जा रहा है, इसलिए. सो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दीजिए और आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है तैयार. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्राइट सॉल्यूशंस लिमिटेड is a large warehousing network company operating through a chain of warehouses at 40 different locations across India. The company now intends to undertake computerization of its owned warehouses as it seeks to provide better value-added and cost-effective solutions for scientific storage and preservation services to the market participants dealing in agricultural products, including farmers, traders, etc. In context of the above case, first,
How is the decision to undertake computerization of owned warehouses likely to affect the fixed capital requirement of its business? And second, name any two sources that company may use to finance the implementation of this plan. And this question carries 3 marks. तो यहाँ पे क्योंकि ब्राइट सॉल्यूशंस अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करने की बात कर रहा है, बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने की बात कर रहा है, तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ब्राइट सॉल्यूशंस लिमिटेड, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली इसके लिए उसे कुछ फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लाइक कंप्यूटर्स खरीदने पड़ेंगे, कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन सेकेंडली, name any two sources that company may use to finance the implementation of this plan. तो यहाँ पे आपको कोई भी 2 sources of finance लिख देने हैं, पर ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं investment in fixed asset, which should never be financed through short-term sources of finance, right? और वो long-term sources of finance हो सकते हैं हमारे retained earnings or long-term loans from financial institutions. Now our next question says, Visions Limited is a renowned multiplex operator in India. Presently, it owns 234 screens in 45 properties at 20 locations in the country. Considering the fact that there is a growing trend among the people to spend more of their disposable income on entertainment, 2 years back, the company had decided to add more screens to its existing setup and increase facilities to enhance leisure, food chains, etc. It had then floated an initial public offer of equity shares in order to raise the desired capital. The issue was fully subscribed and paid. Over the years, the sales and profits of the company have increased tremendously and it has been declaring higher dividend and the market price of its shares has increased manifolds. In the context of the above case, name the different kinds of financial decisions taken by the company by quoting lines from the paragraph. And this question carries 3 marks. पिछले 2 साल से तो मल्टीप्लेक्सेस में जाना, लेजर एक्टिविटीज एंजॉय करना, इट्स लाइक अ ड्रीम जो पता नहीं कब जाके पूरा होगा. पर अब सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है और फिर हमारे बोर्ड भी खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद तो हमने एंजॉय ही एंजॉय करना है, राइट? बट फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन. ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस आइडेंटिफाई करने हैं which are taken by the company with the help of the lines given in the paragraph, right? और ये तो बहुत ही easy होने वाला है. So इसमें देखिए ये third line में 2 years back the company had decided to add more screen to its existing setup and increase facilities to enhance leisure, food chain, etc. तो यहाँ पे क्योंकि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है जिससे कि आगे जाके हमको अर्निंग्स होने वाली है, तो ये हमारा कौन सा डिसीजन हो गया? ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया. देन उसके बाद इसके नेक्स्ट वाले ही लाइन में देखिए, इट हैड देन फ्लोटेड एन इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ऑर्डर टू रेज द डिजायर्ड कैपिटल. तो यहाँ पे क्योंकि हमने फाइनेंस को रेज करने की, फंड्स को रेज करने की बात कही है, तो ये हमारा कौन सा डिसीजन हो गया? ये हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया, राइट? एंड देन उसके आगे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज बीन डिक्लेयरिंग, जो लास्ट लाइन है इस पैरा की, इट हैज बीन डिक्लेयरिंग हायर डिविडेंड एंड द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड्स. तो यहाँ पे क्योंकि हमने डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, तो ये हमारा हो गया डिविडेंड डिसीजन, राइट? तो इस तरह से ये तीनों डिसीजंस मेंशन करने हैं, उनके आगे ये तीनों लाइंस मेंशन कर देनी है और आपका ये क्वेश्चन भी हो गया एकदम तैयार. Now our next question says, Somnath Limited is engaged in the business of export of garments. In the past, the performance of the company had been up to the expectations. In the line with the latest technology, the company decided to upgrade its machinery. For this, the finance manager, Dalmia, estimated the amount of funds required and the timings. This will help the company in linking the investment and the financing decisions on a continuous basis. Dalmia therefore began with the preparation of sales forecast for the next 4 years. FI also collected the relevant data about the profit estimates in the coming years.
By doing this, he wanted to be sure about the availability of funds from the internal sources of the business. For the remaining funds, he is trying to find out alternative sources from outside. Now, identify the financial concept discussed in the above paragraph. Also state the objectives to be achieved by the use of financial concept so identified. And this question carries 5 marks. तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही लंबा चौड़ा आंसर लिखने की जरूरत है. Now see, here before answering the question, I want to discuss a very important concept here. कई बार क्या होता है, बच्चे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर देते हैं. बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एज वेल एज यूजेज ऑफ फंड्स, यानी कि बिजनेस में फंड्स कहाँ से आएंगे और उनको किस तरह से यूज किया जाएगा, ये है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट. बट फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स and then determining the sources of raising that fund. Okay? यानी कि बिजनेस को कितने फंड्स की जरूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में, ये एस्टिमेट लगाना और फिर वो फंड्स कहाँ से आएंगे ये पता करना इज फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आंसर के लिए ये देखिए, ये थर्ड लाइन में, फॉर दिस द फाइनेंस मैनेजर डैन मिया एस्टिमेटेड द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड एंड द टाइमिंग्स, राइट. और फिर उसके बाद ये थर्ड लाइन नीचे से, बाय डूइंग दिस ही वांटेड टू बी श्योर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज ऑफ द बिजनेस. फॉर द रिमेनिंग फंड्स ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव सोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड. तो इन लाइन से हमें ये पता चलता है कि इस पूरे पैराग्राफ में बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है और वो फंड्स कहाँ से आएंगे. तो ये हमारा कौन सा कंसेप्ट है? ये हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग है, राइट. सो डोंट गेट कंफ्यूज नाउ इन एग्जाम. ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, ये आपको अब अच्छे से पता है. ओके, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम बाय एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स and the sources of finance from where the funds will be raised, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की. और फिर आप उसको एक या दो लाइन में फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है वो एक्सप्लेन कर दीजिए. ओके, उसके बाद ये कहते हैं ऑल्सो स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ फाइनेंशियल कंसेप्ट सो आइडेंटिफाइड. सो उसके बाद आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं. ओके, तो उसमें हमने वही कोई 7-8 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हुए हैं अपने चैप्टर में, उनमें से कोई भी 4 पॉइंट उठाइए, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो इसमें कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव्स आप लिख देंगे और आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है एकदम तैयार. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइनेंशियल प्लानिंग ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद फ्यूचर. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट. So this question also carries 5 marks and this is a direct question. So इसमें basically first of all you have to explain what is financial planning और फिर उसके बाद आपने अपना एक plot तैयार करना है, like financial planning done today is going to be implemented in future as it is done to tackle the uncertainties regarding the availability of funds or the timing of funds for the smooth functioning of the business and etc etc. Okay, so इस तरह से एक प्लॉट तैयार करते हुए आपने इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग लिखना है. ओके, तो पहले आप फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सप्लेन करेंगे, अपना एक अच्छा सा प्लॉट तैयार करेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के कोई भी 4 पॉइंट्स लिख देने हैं और इस आंसर को कंप्लीट कर देना है. ओके, नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन. सो इट सेज अ बिजनेस दैट डजंट ग्रो डाइज. Says Mr. Shah, the owner of Shah Marble Limited, with glorious 36 months of its grand success, having a capital base of rupees 80 crores. Within a short span of time, the company could generate cash flow which not only covered fixed cash payment obligation but also create sufficient buffer. The company is on the growth path and a new breed of consumer is eager to buy the Italian marble sold by Shah Marbles Limited.
To meet the increasing demand, Mr. Shah decided to expand his business by acquiring a mine. This required an investment of rupees 120 crores. To seek advice in this matter, he called his financial advisor Mr. Seth, who advised him about the judicious mix of equity 40% and debt 60%. Mr. Seth also just suggested him to take loan from financial institution as the cost of raising funds from financial institutions is low. Though this will increase the financial risk but will also raise the return to equity shareholders. He also apprised him that issue of debt will not dilute the control of equity shareholders. At the same time, the interest on loan is a tax deductible expense for the computation of tax liability. After due deliberations with Mr. Seth, Mr. Shah decided to raise funds from a financial institution. Now part 1 says, identify and explain the concept of financial management as advised by Mr. Seth in the above situation. And second, state the 4 factors affecting the concept as identified in part 1 above, which have been discussed between Mr. Shah and Mr. Seth. And this question carries 5 marks. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें साफ साफ आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे हमारी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया जा रहा है, राइट? कि कितना हमारा डेब्ट्स होंगे, कितने हमारे इक्विटी होंगे. कैपिटल स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है? इट एक्चुअली रिलेट्स टू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. और लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे कौन से हैं? डेब्ट्स एंड इक्विटी. तो यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं कि कितना डेब्ट्स होने चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए. तो ये सब डिसाइड करके हम हमारी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, राइट? तो आपने फर्स्ट का आंसर देना है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड उसको मेंशन कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है इन 2-3 लाइंस. और फिर पार्ट 2 के आंसर के लिए, जिसमें कि हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के कुछ 13-14 पॉइंट्स किए थे, उनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैश फ्लो पोजीशन, रिस्क कंसिडरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स लिखिए और उनको एक्सप्लेन कर दीजिए. और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है एकदम तैयार. That's all for today. Thanks for staying in tune and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you and goodbye for now.